الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. मोहतरम सामिईन सामिआत नाज़रीन नाज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आज मंडे को आपके सामने मैं मुफ्ती सिराज सालेह आपके सामने रुक़या शरइया कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआगो हूँ अल्लाह पाक सही सच बात कहने की, हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। तमाम हजरात से मेरी एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, अदब के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मोबाइल दिया है, फ़ोन दिया, अपने मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इस प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। जितने लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह, नो डाउट, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says अद्दाल्लु अला खैरि कफ़ाइलिही, द पर्सन जो खिदमत करता है, जो काम करता है, जो लोगों को बतलाता है, he will get similar reward like a doer person. 10 आदमी को आपने भेजा है तो 10 आदमी का सुनने वाले का सवाब आपको मिल जाएगा। 100 को भेजा है तो 100 का सवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप भूल जाएं तो हमारे इकरा टीवी के यूट्यूब चैनल पर रुक़या शरइया लिख दीजिए मुफ्ती सिराज, तो आपके सामने आ जाएगा। और अगर इससे भी तो फिर आप तफसीर साले टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सारे ये वज़ाइफ है, मैंने डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे वज़ाइफ। 1 लाख से ज़्यादा आदमी माशाअल्लाह हमारे सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। 1 लाख से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग माशाअल्लाह सुनते हैं। आप भी सुनिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़ारों को फ़ायदा हो रहा है, होता है। एक आदमी ने मुझे बताया, ज़िंदगी में कभी मैंने जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ी, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ी। बुरे काम करता था, ड्रग्स लेता था, शराब पीता था, नॉर्मल नमाज तो पढ़ी ही नहीं, जुमा की भी नहीं। कहा मेरी बीवी मुझे कहती रही जाओ जुमा के लिए मस्जिद में। मैं घर से निकलता था, पार्क के अंदर बैठा रहता था, फिर जुमा के बाद दोबारा घर चला जाता था। यूज्ड टू गो होम बैक आफ्टर जुमा।
I never performed my Jummah Salah in my life. He said, one day I heard one of the Wazeefah. I said, he said, let me try. Maybe कुछ मैंने बताया किया होगा अच्छे रास्ते पर चलने का कोई वजीफा. He started that wazeefah. He says, from that day I never miss my tahajjud namaz too. Yes, Jummah, Faraz namaz and tahajjud. Then he went for Hajj and he went for many umrahs also. Allah Ta'ala can change anybody's life. Just today, one of the musalli was telling me after Zuhr Salah, he says, one musalli said that maybe I gave him some wazeefah to read. The wazeefah he was reading continuously from 3 years. He said, I never read my namaz. Now I am reading my all namaz. And when I was reading Mufti Saab's showed wazeefahs, Alhamdulillah, Allah changed my life. Allah changed everything, not me. So Alhamdulillah, today I am back again on Iqra TV Live to explain you a few things. If you do that, inshallah, Allah will change our life too. Who does not want to prevent from jealous people? Everybody want? Who does not want to prevent and protect from enemies? Powerful wazeefah. From enemies. From hasideen se bachne ka sabse bara wazeefah. Ayatul Sahaba. Imam Bukhari rahmatullah alayhi also mentioned in his Tariq book also Ayatul Sahaba, the lifestyles of the Sahaba. In that book also this wazeefah is mentioned. Number 1, to save yourself from jealous people. हासिदीन से बचना, दुश्मनों से बचना, मक्कारों की मक्कारी से बचना, जालिम से बचने का वजीफा. Number 2, halal wealth, lawful wealth. Allah will grant the person lawful wealth, halal wealth. Allah देगा. और अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी में बरकत देगा. Allah will grant a lots of sustenance in his life. This is the wazeefah I'm giving you, which is Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala used to practice. Sahabi Rasul sallallahu alayhi wasallam. I given you the reference also. Number 4, घर के अंदर जो झगड़े होते हैं, the arguments and fights in the house, Allah will remove completely between parents and children, between husband and wife, between the brothers and sisters, or between sisters, or between brothers. जो भी प्रॉब्लम होगा घर का, अल्लाह उसको खत्म कर देंगे. Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala said, I used to practice this wazeefah every day in my life. Allah granted me so much wealth. इतना माल अल्लाह पाक ने मुझे दिया कि इतना सोना गोल्ड, इतना कि नॉर्मली गोल्ड शॉप में आप जाओ तो वो सोने को काट देते हैं नाइफ से. यहां सोने के ईंट्स को, ब्रिक्स को, दे यूज्ड टू ब्रेक कुदाल से यू नो, जो होता है ना, उससे ऑक्स से उसको तोड़ते हैं, ऑक्स से. इतना सोना था. फरमाया ये सब उस वजीफे की बरकत थी. कौन सा वजीफा है?
This wazeefah helps you to prevent you, protect you from jealousy, from enemy, from magician who does black magic. Number one. Number two, Allah will grant you halal sustenance. Halal rozi milegi. Number three, rozi mein barakat bahut hogi. Lots of barakah in your rozi, in your sustenance. The importance, lots of arguments and fight in the house, मियाँ बीवी के दरमियान, औलाद और माँ बाप के दरमियान, भाई भाई के दरमियान, बहन बहन के दरमियान, फैमिलीज के दरमियान, इसके पढ़ने से अल्लाह इन सारी मुसीबतों से हिफाजत करेगा. Who's ready to do this amal? Very easy, very simple. You can see I'm sitting here in one of the studio place. This is a 4 corner here. 1, 2, 3 and 4. Every house got 4 corner. Every house got 4 corners. Downstairs 4 corners. Upstairs 4 corners. The 3rd story at upper 4 corners. One day you can do downstairs in the 4 corners. Next day you can do in the 2nd floors in 4 corners. The 3rd day you can do on the 3rd floor. Very simple. One time Ayatul Kursi in 1 corner. Another Ayatul Kursi in 2nd corner. 3rd Ayatul Kursi in the 3rd corner. 4th time Ayatul Kursi in the 4th corner. हर कोने में एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है बस. नेक्स्ट डे 2nd स्टोरी पर चला जाए, उसके बाद फिर 3rd फ्लोर पर चला जाए अगर है तो. ये जबरदस्त वजीफा है which is mentioned by Imam Bukhari rahmatullah in his Tarikh book, also Hayatul Sahaba, in Hisn Hisin, even Amalul Yawm wal Layl. The books I given you the reference mentioned this Wazeefah about Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, who was a great Sahabi and Rasulullah SAW, and he was the richest person among the Sahaba. Very simple, very easy. Inshallah, try from today. No jinn, no jadoo. If I tell you the virtues of Ayatul Kursi, the ulama have written the big books about the virtues of Ayatul Kursi. But we don't want to go more in detail, just understand. Rasulullah SAW asked the Sahabi, which is Sayyidul Ayat, which is the king or queen of the ayats. Sahabi says Ayatul Kursi. Allah's Nabi SAW put his right hand on the chest of the companions and he says, may Allah bless you with knowledge. Subhanallah. आप लोग आयतुल कुर्सी को पकड़ लो हर कोने में. Inshallah, there'll be no shaitan, no magic, no enemy can do anything. Also in the house, barakah, halal sustenance. Allah will protect you from harams. Last things, very important. Allah will remove all the fighting and arguments from the house. The house will become क्या कह रहे हैं, जन्नत का नमूना, simple of Jannat. Allah amal ki tawfiq de, inshallah. This is the biggest wazeefah I told you today. Inshallah, after break, I'm going to come back just now within a few seconds, inshallah. Stay and listen, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह, हम आगे चलते हैं वजीफा में. अगर कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दे, Allah forgives his entire sins, from the eyes, from the mouth, from the nose,
from the fingers, from the hands, from the feet, from the ears, from the head. कोई चाहता है कि अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दे, सारे गुनाह। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला इसको बड़ा घर दे, स्पेसिस, बिग हाउस, बड़ा घर दे। और नंबर 3, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे, रोजी में बरकत दे। If a person wants that Allah forgives his entire sins, number 1. Number 2, Allah grant him a spacious, bigger house. Or if he don't have house and he want house, he want to buy house, Allah make it easy for him. Number 3, Allah grants a lots of barakah in his sustenance. So वो एक दुआ है which is mentioned by Imam Tirmizi rahimahumullah ta'ala and Imam Abu Dawud rahimahumullah ta'ala, and many scholars narrated this hadith in the hadith book. उनकी हदीस की किताब में ये रिवायत है, in the chapter of ablution, wuzu. कौन सी दुआ है? उर्दू तर्जुमा पहले, ए मेरे प्यारे अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, ए मेरे प्यारे अल्लाह मुझे बड़ा घर नसीब फरमा, ओ मेरे प्यारे अल्लाह मेरी रोजी में बरकत नसीब फरमा। 3 चीजें, 3 things. Oh Allah, forgive my entire sins, entire past sins. Oh Allah, oh my beloved Allah, forgive my entire past sins. Oh my beloved Allah, grant me a spacious and bigger house. Oh my beloved Allah, grant me a barakah and blessing in my sustenance. Allahu Akbar. तो ये दुआ हदीस में है, इसको पढ़ना है ड्यूरिंग द वुजू, वुजू के दरमियान में, वुजू करते करते ध्यान के साथ, वुजू के बाद एक मर्तबा, and after every farz namaz once only, during the wuzu, recite this dua during the wuzu with concentrations, with devotion. After wuzu, with devotion, and after every farz namaz. The dua, it is written in many hadith book. You can open Hisn Hisin, you can open the book is called Amalul Yawm wal Layl, you can open the Hayatul Sahaba, you can open Tirmidhi Sharif, many hadith books. कौन सी दुआ है? वो दुआ क्या है बताओ? दुआ बहुत आसान है. Everyone knew that dua, but we don't concentrate, we don't ponder, we don't have devotion and understand the dua. Listen the dua. I already translated in Urdu, I translated in English. Now I'm going to recite the dua which is mentioned from the blessing mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while you're washing your face, while you're washing your hands, while you're making masa, while you're washing your feet. Read that dua after wuzu also, after namaz also. Allahummagh firlee zambi. Oh Allah, oh mere pyare Allah, mere gunahon ko maaf farma. wassi fi daari. और मेरे घर को वसी फरमा, मुझे बड़ा घर नसीब फरमा.
बाज मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह मेरे दिल में सुकून नसीब फरमा, वस्सी फी दारी मीनिंग मेरे दिल में सुकून नसीब फरमा, बाज कहते हैं बड़ा घर नसीब फरमा, व बारिक ली फी रिज़्क़ी, ओ अल्लाह मेरे रोजी में बरकत नसीब फरमा। बहुत आसान है। You're going to remember the dua, inshallah. Most of the people knew the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which I mentioned. One person, he was always used to ask our Shaykh, Hazrat, I don't have house, I have a broken shelter. Whenever the rain comes, the house gets full of water, rain water. या हजरत कोई दुआ बतला दे। हजरत ने फरमाया वुजू करते करते ये दुआ पढ़ो, वुजू के बाद ये दुआ पढ़ो, नमाज के बाद ये दुआ पढ़ो। Recite the dua during the wuzu, recite this dua after wuzu, recite this dua during after first salah. He said he continuously started the dua, and he said himself, Allah Tabarak wa Ta'ala granted him a mashallah, a castle, a proper house, very big house. We can say, it's like a villa. He's living in a villa today. That was the barakah of the dua. But you have one condition. You have to recite the dua with devotion, consultations, and pondering. What are you reading? Understand the meaning and read. Inshallah, Allah will make it easy. आगे चलते हैं एक और वजीफे की तरफ। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever any difficulty, whenever any musibat, whenever any problem, whenever any calamities, जब कभी कोई परेशानी, जब कभी कोई मुश्किलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी, either family, either children's, either outside enemies, or anything about battle, any problems, he used to recite continuously the two du'as, which is in the hadith, many hadith book. Number one, the dua, Ya Hayyun Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. You remember the dua? Ya Hayyun Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. ए अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, ओ हय्युन या कय्यूम मैं तुझसे मदद मांगता हूँ. This is the one dua. Second dua, Allahu Allah la ushrika bika shay'a. Simple short duas he used to say. Allahu Allah La ushrika bika shay'a. Allah Allah मैं तेरे साथ किसी को पार्टनर नहीं बनाता हूँ. That's two du'as. Very simple, very short, very sweet and very powerful. Jandar, Shandar, Maldar dua. बहुत जबरदस्त दुआ. Jandar, Shandar, Maldar, powerful dua. You're going to inshallah see the barakah of this dua. Whenever any problem comes, anything for yourself, for your families, for your children, for the house, for outside, anything. Ya Hayyun Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ek dua to ye hai. Either you can hold fast this dua, or the another dua, Allah Allah La ushrika bika shay'a. Allah Allah La ushrika bika shay'a. Powerful duas. मेरे लिए भी दुआ करना. और मैं हमेशा जितने लोग मेरे लिए दुआ करते हैं
जो जो मेरे इन प्रोग्राम को सुनते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरा हक बनता है मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूं, उन तमाम के लिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूं। याद रखो, ये मुझ पर हक है, जो मेरे लिए दुआ करेगा मैं उसके लिए जरूर दुआ करूंगा। याद रखो, चाहे वो मुझसे मेरे मुरीद हो, चाहे उसको मुझसे मोहब्बत हो, चाहे वो मेरे प्रोग्राम को सुनते हो और उस प्रोग्राम से उनको बहुत फायदा हुआ हो, वो मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरे ऊपर लाजिम है मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा इंशाअल्लाह। बल्कि जितने मैं नेकी के काम करता हूं उसमें वो मेरे पार्टनर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। कयामत में उनको सवाब मिलेगा। Those who make dua for me, either from my murids, those who bad with me, national or international, or those who listening my program every time. There are lots of people, mashallah. I got so many followers on my TikTok dua, the Wazeefahs, Tafsir Saleh, TikTok. You says lots of Wazãif is there. Make dua. They're making dua for me. I am making dua for them, inshallah. Wherever, even I'm in Umrah, even I'm in Hajj, even in Ramadan, even in I'tikaf, making dua for each and everyone. Jazakumullah. Let's go more further. The fourth Wazeefah today, about Suratul Fatiha. Surah Fatiha is a greatest surah in the Quran Kareem. Special, the surah is given to Rasulullah SAW and this ummah, not the past nations, not the past people. सिर्फ इस उम्मत को दी गई है। उसका नाम है सूरतुल फातिहा। 7 आयात अल्लाह said in the Quran Kareem, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. 7 ayat which always repeat in every rakats, in faraz, in wajib namaz, in sunnat namaz, in nafal namaz. Best surah is called Suratul Fatiha. Our akabirin, awliya kiram, qutub and abdal, they used to recite Suratul Fatiha special at the time of tahajjud. Tahajjud ke time mein ye dua padhte the. Tahajjud time. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, who died in the jail, in prison, while he was reciting Quran Kareem, he was in prison. He completed 80 Quran in 2 years in his prison, while there was no comfortable zone, different type of jail. Inside, his brother is writing, he completed 80 Qurans in 2 years by heart. And then when he started the 81 time the full Quran Kareem, when he reached to the ayat of Suratul Qamar, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikim muqtadir, and he passed away. While he was reciting ayat of Jannat, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Allah is talking about the gardens of Jannah, about the rivers of Jannah. And he was reciting that ayat and he passed away. He mentioned, he used to recite Surah Fatiha, starts after Faraz of Fajr Salah, and is to complete until sunrise. Every day continuously he was reading Suratul Fatiha, Suratul Fatiha, Suratul Fatiha. So only one time, today's Wazeefah, I just only explain you the virtues of Suratul Fatiha. But if you recite one time Suratul Fatiha and blow in a glass of water, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ameen. Blow 3 times in the water, glass of water. And then you must use this water in the food, in the tea, whatever you cook in the house. Oh my mothers, listen. उसके बाद सारे घर वाले उस खाने को खाएं, बीमारियां दूर हो जाएगी, औलाद नेक बनेगी, औलाद, children become pious. Allah will grant them tawfiq, put them on the straight path. Ihdina sirat al-mustaqim. They will leave all the bad things, drugs, stealing, smuggling, adulteries, many things, for the husband, for the wife, for children, everybody in the house, सब उस खाने को खाएंगे. आपको सिर्फ एक बार पढ़कर वुजू जरूरी नहीं है. The wuzu is not necessary. Just read 1 time, 3 times, blow in the glass of water. उसको फिर खाने में डाल दो, सारा घर खाएगा. इंशाअल्लाह घर के अंदर में सबको अल्लाह हिदायत नसीब फरमाएंगे. Allah will grant them hidayah. Allah will put our children on the straight path. Allah will put our husband and wife on the straight path. बीमारियां खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएगी, दुख और दर्द खत्म हो जाएगा. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said himself is Suratul Shifa. Suratul Shifa, Suratul Fatiha is Suratul Shifa. A Sahabi came in a masjid and he said, Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam said to the Sahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam called him, hey, so and so Sahabi. He didn't reply. He was reading namaz. When he completed namaz, Assalamu alaikum wa rahmatullah salam, he went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, I call you, didn't reply me. Ya Rasulullah, was in namaz. He said, whenever the Allah and Rasul call you, you break your salah and come to them, come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then he says, oh my Sahabi, before you leave this masjid, I will teach you some Quranic ayat, which is the best ayat. Which is that one? When they were living together from masjid, the Sahabi reminded Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wo kaun si ayat hai? Nabi sallallahu alaihi wasallam told him Suratul Fatiha, best surah. Jibreel alayhi salam came and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, today the special angel came. Special angel, he never came before. First time he's coming to visit you. When he came and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I brought a special surah for you from Allah, that is Suratul Fatiha. Can you believe me? We think it's small surah. I remember the many mothers, they cry by me and they says, my son is taking drugs. My son is taking drugs. My husband is drinking wine. He drinks wine. He taking drugs. My husband is doing this, stealing, committing zina with another woman. My children are going out. They come late. I used to tell them, you read Suratul Fatiha 1 time and the ayat, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقيم. Repeat 3 times. Then صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Start again after Ameen. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين. हे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं. हे अल्लाह, सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा. With consultations, with devotion, with pondering of your masla, of your problem, of your
the of the calamities, whatever. Just remember that and read Sirat al-Ladina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ameen. Again Surah Fatiha, the two ayat number 4 and 5, you have to repeat 3 times every time you start Surah Fatiha. Only Surah Fatiha 3 times you have to read, and those two ayat number 4, ayat number 5 from Surah Al-Fatiha, repeat three times, and then you blow in the water and put in the food and tea. Inshallah, you will see within few days your child will stop doing bad things, inshallah. शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए. I am telling you, not from my tongue, I'm telling you from the bottom of my heart. I have seen so many bad cases, and I told them this wazeefah. Today, each and every houses, the parents are crying for the children, for the sons, for the daughters. They don't listen to father. They don't listen to mother. Read this wazeefah. Inshallah, Allah will make everything easy. So this is the wazeefah, is called wazeefah of Surah Al-Fatiha, the amazing wazeefah. Ek aur wazeefah, chalo, before finishing times. आप लोग सब माशाल्लाह मेरा वजीफा सुनकर बेहोश हो गए. कोई सवाल तो करता नहीं, क्या बात है? Everybody look like he's unconscious now. Oh, Mufti साहब is talking one way, let us listen. क्या बात है? सब सो गए हैं क्या? कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई दुआ के लिए नहीं कहता कि सारे सुन लिसन. आप कहेंगे अल्लाह हजरत मुफ्ती साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, तो जितने लोग होंगे सब दुआ करेंगे आपके लिए, हम सब आमीन कहेंगे. एनीवे चलो, एक और वजीफा जुमा के दिन का. जुमा की नमाज के बाद, जुमा की नमाज के बाद, if you recite 100 times a small dua, this is a dua of angels. आसमान के सारे फरिश्ते यही दुआ पढ़ते हैं. Can you imagine? The angels are reciting same duas. If you recite 100 times after Jummah Salah, or after your on Friday after for the ladies Zohar Salah, क्या होगा? Allah will forgive your 100,000 sins. Allah forgives 100,000 sins of your life, from your life. 100,000. Just to recite 100 times. और रोजी में बरकत भी देगा. ये फरिश्तों की तस्बीह है. Is it hadith? नंबर 2, उसके बाप के Allah will forgive his father's 12,000 sins. Allah will forgive his mother's 12,000 sins. Isn't it hadith? 1,00,000 गुना पढ़ने वाले का, 12,000 father का, 12,000 mother का. All together 124,000 गुना अल्लाह माफ करता है. 124,000 guna Allah forgives. If you recite 100 times the wazeefah every Friday after Jummah Salah, who does 100,000 guna? But Allah forgives. When there is no guna, everything is forgiven, and you recite again and again, Allah grants you higher status in Jannah. अब कौन सी दुआ है? दुआ बहुत जबरदस्त है, बहुत आसान है. कौन सी दुआ है? सुन रहे हो. कौन सी दुआ है? सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी. बस 100 times. सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी.
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिह. This is the Wazeefah of the angels. Allah loves this tasbih so much, so much, so much. Allah will forgive you 100,000 sins and your father's 12,000 sins and your mother's 12,000 sins. Make a habit to read every Friday after Jummah Salah. Inshallah. Keep yaqeen, keep 100% faith and the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You can googly out. Googly. Today we find searching everything on the Google, but we don't search the good things. We search all the bad things. We don't search good things. Allah tabarak wa ta'ala grant me, grant you, grant everyone, especially my listeners. Allah grant everybody आफियत, सेहत, सुकून. एक और बार अगर आप लोग मेरे लिए दुआ करोगे, इंशाअल्लाह इस फर्ज for me to make dua for all of you. इंशाअल्लाह हम दुआ कर लेते हैं. या अरहमर राहिमीन, या दिल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या दय्यान या सुल्तान, या कदीम अल एहसान, या कदीम अल एहसान, या कदीम अल एहसान. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. या हय्युन या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस. अल्लाह अल्लाह रब्बी ला नुशरिका बिका शैआ. अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिस्मिका अल्लाह व बिस्मिका अर्रहमान व बिस्मिका अल-बर्रुर रहीम व बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा मा लम नअलम. ऐ अल्लाह, जितने लोगों ने जहाँ जहाँ मेरे साथ मेरी दुआओं में हाथ उठाए हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा. जहाँ जहाँ है नेशनल इंटरनेशनल सबकी मग़फ़िरत. और जो मेरे लिए दुआ करते, अल्लाह सबको आफ़ियत, सेहत, सुकून नसीब फरमा. सबकी परेशानियों को, बीमारियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा. या अल्लाह हम सबको आफ़ियत नसीब फरमा. या अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रखना. जब हमारा वक़्त आए अल्लाह हुस्न ख़ातिमा बिल खैर सबकी ज़बान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, उनके रूह निकले. ऐसी बेहतरीन मौत हमें नसीब फरमा. या अल्लाह अपने फजल करम से, अपने रहम करम से हमारी दुआओं को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, औलिया किराम के सदके तो कबूल फरमा. व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. इसी के साथ आज मैं मुफ्ती सिराज आपसे इजाज़त लेता हूँ. इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीक मंडे को आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा और मज़ीद वज़ाइफ बयान करूँगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.